हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 30 फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके IBPS SOIT मेंस एग्जाम के लिए। इसमें हम लोगों ने कवर किए सारे टॉपिक्स, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं या नहीं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारे टॉपिक्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। Options है A. Separate memory for data and instructions. B. Shared memory for data and instructions. C. Parallel execution of instruction and data fetch. D. Optical memory usage. And the right answer is option B. Shared memory for data and instructions. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सिंगल शेयर्ड मेमोरी होती है फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हार्वर्ड आर्किटेक्चर में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, thrashing occurs when. Options है A. The CPU utilization increases sharply due to excessive page faults. Option B. The system runs out of physical memory and automatically allocates more virtual memory to all processes. Option C. Excessive paging reduces performance. Option D. The degree of multiprogramming is decreased to maintain the working set size of each process. And the right answer is option C. Excessive paging reduces performance. थ्रैशिंग कब अकर होती है? जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इतना बढ़ा देते हैं कि सीपीयू पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करता है देन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी क्या कहता है? एक्सेसिव पेजिंग की वजह से परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है। दिस इज व्हेन थ्रैशिंग अकर्स। क्वेश्चन नंबर 3, आईडीएस डिटेक्ट्स इंट्रूजन्स व्हाइल आईपीएस। ऑप्शंस है ए. logs and blocks them. Option B. only monitors traffic. Option C. sends reports. Option D. scans files and applications for known malware signatures before execution. And the right answer is option A. logs and blocks them. IDS और IPS में यही फर्क होता है। IDS है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, whereas IPS लॉग और ब्लॉक करता है, मतलब वो इंट्रूजन पर एक्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्विच प्राइमरीली वर्क्स एट विच OSI लेयर। ऑप्शंस है ए. डेटा लिंक, बी. नेटवर्क, सी. ट्रांसपोर्ट, डी. फिजिकल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. डेटा लिंक। स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है जहां पर वो मैक एड्रेस को यूज करके डेटा फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है। नेटवर्क लेयर पे क्या काम करता है? राउटर। और फिजिकल लेयर पे कौन काम करता है? हब। Question number 5. Which command in Linux shows the current running processes? A. PS, B. PWD, C. Who, D. DF. And the right answer is option A. PS. PS क्या बताता है? Process status. जो भी current running processes है वो उस कमांड से पता चलती है। PWD present working directory होता है। C. Who. Who क्या बताता है? कौन कौन से यूजर्स लॉग्ड इन है। और डीएफ क्या बताता है कि कितना डिस्क स्पेस यूज हुआ है और कितना फ्री है। क्वेश्चन नंबर 6, अ डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय इंश्योरिंग दैट द सिस्टम नेवर एंटर्स। ऑप्शंस है ए. स्टारवेशन, बी. क्रिटिकल सेक्शन, सी. अनसेफ स्टेट, डी. बिजी वेटिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अनसेफ स्टेट। जो भी डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक है ना, उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट में ना जाए, क्योंकि वहां पर डेडलॉक अकर हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस क्या है? स्टारवेशन। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस इंडेफिनेटली वेट कर रहा है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? इट्स बेसिकली अ पीस ऑफ कोड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बिजी वेटिंग क्या होता है? जहाँ पे कोई प्रोसेस बार बार चेक करती रहती है कि ये कंडीशन ट्रू हुई या नहीं हुई। तो ये सब बचे हुए ऑप्शंस ए, बी और डी, दीज आर नॉट रिलेटेड टू डेडलॉक अवॉइडेंस, इसलिए राइट आंसर है अनसेफ स्टेट। Question number 7. In DBMS, which normal form removes partial dependency? Options are A. 1NF, B. 2NF, C. 3NF and D. BCNF. Important है normalization, एक बार पढ़ के जाइएगा।
पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव होती है, ऑप्शन बी 2NF इज द राइट आंसर। 3NF में क्या रिमूव होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार स्कीमा इन डेटा warehousing consists of options है A, a centralized fact table linked to a multiple denormalized dimension tables, B, multiple fact tables connected through normalized dimension tables, option C, only dimension tables with hierarchical relationships between them, option D, a single fact table containing both transactional and metadata information। स्टार स्कीमा में क्या होता है? ऑप्शन ए, एक सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल होती है लिंक टू मल्टीपल डीनॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल्स। जो ऑप्शन बी है, मल्टीपल फैक्ट टेबल्स कनेक्टेड थ्रू नॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल्स, दिस इज मोर रिलेटेड टू गैलेक्सी स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 9, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर फंक्शन कॉल मैनेजमेंट? ऑप्शंस है ए क्यू, बी स्टैक, सी एरे, डी लिंक लिस्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टैक। स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे स्टैक वर्क करता है। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल सब कुछ स्टैक में पुश हो जाता है, और जब फंक्शन रिटर्न होता है तो यही सारी इंफॉर्मेशन पॉप आउट हो जाती है। Question number 10. The main difference between SRAM and DRAM is option A. SRAM is volatile while DRAM is non-volatile. Option B. DRAM uses capacitors, SRAM uses flip-flops. Option C. SRAM needs refresh, DRAM does not. Option D. Both store data using magnets. And the right answer is option B. DRAM use capacitors, SRAM uses flip-flops. ऑप्शन ए दोनों ही वॉलेटाइल होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी ऑपोजिट कर दिया, डी रैम डज नॉट नीड रिफ्रेश वेर एज एस रैम डज। एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दोनों ही मैग्नेट्स की हेल्प से डेटा स्टोर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडेक्सिंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर रेंज क्वेरीज? ऑप्शन है ए हैश इंडेक्स, ऑप्शन बी बी ट्री इंडेक्स, ऑप्शन सी बिटमैप इंडेक्स, ऑप्शन डी क्लस्टर इंडेक्स। And the right answer is option B, B tree index। तो बेस्ट होता है रेंज क्वेरीज के लिए बी ट्री इंडेक्स। हैश इंडेक्स हम कब यूज करते हैं? जब हमें एग्जैक्ट मैचेस चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्लाउड मॉडल ऑफर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड फीचर्स? ऑप्शन है ए कम्युनिटी क्लाउड, बी पब्लिक क्लाउड, सी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड, डी हाइब्रिड क्लाउड। And the right answer is option D, hybrid cloud। Question number 13. Containerization technology like Docker uses option A, hardware virtualization, option B, OS level virtualization, option C, network virtualization, option D, application virtualization। And the right answer is option B. They use OS level virtualization। Every container, it runs on a separate instance with its own libraries and dependencies, but वो सभी एक common operating system kernel share करते हैं। Question number 14. Which of the following is a type of cyber attack where data is encrypted for ransom? Options है A, ransomware, option B, phishing, option C, spyware, option D, rootkit। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रैंसमवेयर। रैंसमवेयर साइबर अटैक में क्या होता है? अटैकर विक्टिम का डेटा एन्क्रिप्ट कर लेता है और उससे पेमेंट मांगता है उसे वापस डेटा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लॉकचेन इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी प्राइमरीली थ्रू ऑप्शंस है ए सेंट्रलाइज्ड लेजर, बी सिंगल पॉइंट कंट्रोल, सी प्राइवेट सर्वर स्टोरेज, डी हैश चेनिंग एंड कंसेंसस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ब्लॉकचेन कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन करता है? बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस टू लिंक ईच ब्लॉक टू प्रीवियस वन। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
Question number 16. The difference between get and post in HTTP is that options A. Post requests are automatically encrypted and therefore more secure than get requests. Option B. Post is considered a safe and idempotent method used for retrieving data, whereas get is used for submitting data that causes side effects. Option C. Get requests cannot be cached and bookmarked while post requests can. Option D. Get appends request parameters to the URL while post transmits them within the message body. And the right answer is option D. Option A कह रहा है कि post request automatically encrypt होती है and therefore it is more secure. कोई भी request ना ही post ना ही get automatically encrypt होती है. Therefore this option is wrong. Option B में reverse कर दिया है. लिखा है पोस्ट इज कंसिडर्ड अ सेफ एंड आइडेम्पोटेंट मेथड जबकि गेट होता है एंड पोस्ट बाद में आएगा इट इज यूज फॉर सबमिटिंग डेटा दैट कॉजेज साइड इफेक्ट्स तो टर्मिनोलॉजी को रिवर्स कर दिया गया है गेट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कैश्ड एंड बुकमार्क इसमें भी गलत लिखा है गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड एंड बुकमार्क वाइल पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है Question number 17. Regression testing is done to options A. Ensure that recent code changes have not introduced new defects in existing functionalities. Option B. Validate that all modules meet their individual functional specification for the first time. Option C. Verify system behavior under peak load conditions after deployment. Option D. Detect defects caused by hardware or network failures during system integration. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ के जाइएगा इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इट ensures that recent code changes have not introduced new defects in existing functionalities. Question number 18. In Python, which data type is immutable? And the right answer is option C, tuple. Tuples are immutable. Immutable का क्या मतलब होता है? Elements that cannot be changed, added or removed after creation. Baki, list, dictionary and set, they are all mutable. Question number 19. The COCOMO model is primarily used to estimate options are A. The effort, development time and cost required for software based on its size and complexity. Option B. The probability of project risks and their impact on delivery timelines. Option C. The number of defects and overall software reliability before deployment. And option D, the optimal team size and resource allocation strategy for agile development. And the right answer is option A. COCOMO model is primarily used to estimate the effort, development time, and cost required for software based on its size and complexity. Question number 20. In a transaction, read uncommitted isolation level allows option A dirty reads, option B phantom reads, option C lost updates, option D no reads. And the right answer is option A, dirty reads. Read uncommitted lowest isolation level होता है and it allows dirty reads. Dirty reads का क्या मतलब होता है? Transaction can read data which is not yet committed by another transaction. Question number 21. The hypervisor used in virtualization is responsible for options A. Writing code to disk. Option B. Managing virtual machines. Option C. Encrypting data. Option D. Networking between routers. The right answer is simple सा क्वेश्चन है ऑप्शन बी मैनेजिंग वर्चुअल मशीन्स हाइपरवाइजर तो यूज ही इसलिए होता है इट इज यूज फॉर मॉनिटरिंग वर्चुअल मशीन्स एंड वो क्या करता है इट अलाउज मल्टीपल वीएम टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल होस्ट क्वेश्चन नंबर 22 which of these architectures is used in deep learning for image recognition options है a cnn b rnn c lstm d gan
And the right answer is A, CNN. CNN are specifically designed for image recognition. जो GAN होता है ना, GAN, they are used for image generation but not recognition. And बाकी का जो है RNN and LSTM, they are used for sequential data. Question number 23. A 32-bit processor can theoretically address how much memory? Options है A 2 to the power 32 bits, B 4 MB, C 2 to the power 32 bytes, D 16 MB. And the right answer is option C. देखो एक 32 बिट प्रोसेसर के पास 32 बिट्स होंगे फॉर मेमोरी एड्रेसिंग और एक एड्रेसिंग का मतलब होता है एक बाइट। तो उसके पास कितने यूनिक मेमोरी एड्रेस हुए? 2 टू द पावर 32 बाइट्स। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 24. While its primary role is diagnostics and notification, the Internet Control Message Protocol is crucial for preventing a type of denial of service condition known as a black hole by facilitating the mechanism of options है आपके सामने A TCP three-way handshake establishment, B path MTU discovery, C dynamic host configuration protocol lease renewal, D. Autonomous system number negotiation in border gateway protocol. The right answer for this question is option B. Path MTU discovery, it uses ICMP messages to inform a sender कि यार जो आपने पैकेट भेजा है ना, it is too large for next network hop. तो आप इसे resize करके भेजो या fragment करके भेजो. Question number 25. Public key infrastructure relies on options है A. Digital certificates and certificate authorities. B. Symmetric keys only. C. Biometric scanning. D. Cloud authentication. Simple सा question है. The right answer is option A. Digital certificates and certificate authorities. Which of the following statements about the ARP address resolution protocol are correct? ARP maps an IP address to its corresponding MAC address within a local network. ARP requests are sent as unicast frames while ARP replies are broadcast to all hosts. ARP operates at the network layer of the OSI model. Gratuitous ARP can be used to detect duplicate IP addresses or update caches after IP changes. 1 and 2 are correct, 1 and 4 are correct, 3 and 4 are correct, या 1, 2 and 3 are correct. And the right answer is option 1 तो simple है काफी. ARP maps an IP address to its corresponding MAC address within a local network. And option 4 क्या कह रहा है? Gratuitous ARP can be used to detect duplicate IP addresses or update caches after IP changes. तो हाँ, GARP एक रिक्वेस्ट होती है जो कि होस्ट ही भेजता है टू चेक इट्स ओन IP एड्रेस. अगर कोई और होस्ट रिप्लाई करता है तो वो उस रिक्वेस्ट को डुप्लीकेट मार्क कर देता है. तो इसलिए ऑप्शन 4 भी करेक्ट है. Question number 27. In machine learning, the process of splitting data into training and testing sets helps to option A. Reduce processing time. B. Evaluate model performance on unseen data. C. Eliminate the need for data cleaning. D. Increase dataset size. And the right answer is option B. Evaluate model performance on unseen data. Question number 28. Which type of malware spreads by attaching itself to legitimate programs? Simple सा question है. Option A virus, B worm, C Trojan, D ransomware. And the right answer is option A virus. Question number 29. In software engineering, coupling refers to option A degree of interdependence between modules,
Option B, degree of cohesion within a module. Option C, size of code base. Option D, testing depth. And the right answer is option A, degree of interdependence between modules. Last question, question number 30. What is the default port of SSH service? Option A 3389, option B 80, option C 22, option D 443. And the right answer is option C 22. 443 HTTPS के लिए यूज होता है, 80 HTTP के लिए यूज होता है और 3389 RDP के लिए यूज होता है. तो दैट वाज ऑल. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ. कमेंट में मुझे बताओ कि आपने आउट ऑफ 30 कितना स्कोर किया है. एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दो यार, फ्री है. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.